I would like to request all the dignitaries to proceed to the front of the stage for the lighting of the lamp. Can other delegates please join our honorable ministers in the lighting of the lamp? Fire acts as a dispeller of darkness. Tamaso ma jyotirgamay, which means lead us from darkness unto light. I request our dignitaries to please be seated on the stage. Our endeavor for this G20 Digital Economy Working Group meeting is to light the path for all by making the agenda and its priorities inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive. First, by building resilience in the cyberspace. Second, by developing digital public infrastructure for creating socially transformative solutions. And finally, by facilitating digital skilling for creating a future-ready workforce. Through the working group, we will explore ways in which digital technologies can help achieve the objective of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one world. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, to begin the very first meeting of the working group, I am honored to introduce Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, who has been steering the agenda of the Digital Economy Working Group and the working of METI. May I request, sir, to kindly deliver his welcome remarks and present the agenda for the day. उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी श्री आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री राजीव चंद्रशेखर जी, respected chief secretary of government of UP Dr. D.S. Mishra sir, distinguished dignitaries, delegates from G20 countries, invited nations, multilateral, bilateral agencies, academia, industry, startups, session speakers, media representatives, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great privilege and honor for me to be here this morning at the first Digital Working Group DEWG meeting in this beautiful city, capital city of Lucknow. I am sure you would have enjoyed and had a first taste of this beautiful city which has immense history and culture. And over the next 3 days, I am sure you would get to see much more in terms of culture, heritage, cuisine,
art and artifacts, and the great thing has been done under the leadership of Honorable Chief Minister. I would like to extend a warm welcome to the honored guests, esteemed dignitaries, and all the delegates from G20 members, guest countries, international organizations, and all the participants in this meeting. In recent years, there has been a consistent shift in the contours of global economy into the digital space, which has opened new frontiers of development. The digitalization of different sectors has become a pioneer in aiding the post-pandemic economic recovery phase. The digital economy allows nations to generate new employment possibilities and encourage entrepreneurship in emerging economic sectors like fintech, e-commerce, etc. The creation of digital infrastructure and providing people with the means to participate in the digital economy will be essential component to these solutions. In light of these developments, the DEWG is a vitally important working group that can aid nations in navigating the ongoing financial or downturns by promoting cybersecurity in the digital economy, facilitating the development of digital public infrastructure, and encouraging digital skilling and upskilling to produce a workforce that is prepared for the future. As an example, India's digital economy grew 2.4 times faster than the Indian economy, with strong forward linkages to non-digital sectors. Official figures also highlight that around 62.4 million, that is 11.6% of the national workforce, are employed in the overall digitally dependent economy. The Digital India campaign, which was launched in 2015, served as an enabler for the digital economy's growth, ensuring that the citizens are connected through high-speed networks and can access a robust nationwide digital ecosystem. The role of DEWG in G20. The role of the digital economy is also becoming increasingly important for the G20 as it offers a range of opportunities for economic growth, job creation, and innovation. The G20 Digital Economy Working Group aims to facilitate collaboration between G20 countries in promoting global digital transformation. The DEWG has previously discussed building interconnected, protected, and safe digital technologies to develop an inclusive, resilient, and sustainable digital economy. As chair of the DEWG, India intends to build on the achievements and commitments of the past presidencies while introducing new areas for potential collaboration among G20 nations. India's agenda. With the G20 presidency in 2023, India seeks to initiate focused deliberation on 3 priority areas. And I start. Number 1, digital public infrastructure for digital inclusion and innovation. 2, cybersecurity for a safe, trusted, and resilient cyberspace. And 3, digital skills, building a global future-ready workforce. Digital public infrastructure, the first point. DPI plays a crucial role in enhancing government-citizen engagement by empowering citizens and ensuring ease of governance, business, and living. The development of DPI in India has demonstrated that countries and developing economies can leapfrog to create large-scale social transformation. Under India's presidency, the G20 will look forward to elucidating the benefits of DPI and offer a cohesive framework to build similar DPIs across G20 members. The DPI agenda under the DEWG will also focus on low and middle income economies and devise funding mechanisms for developing DPI ecosystem in these countries. India's own DPI system, I would like to quote a few. Aadhaar has been one of our world's largest digital identity program, which has provided digital identities to 1.3 billion people and facilitated over 80 billion e-authentications in last decade. It was kick-started with the objective of building an ID for everyone for strengthening service delivery and promoting innovation. Unified Payment Interface, UPI. India's leading digital payment platform, UPI, is an open and interoperable digital public payment platform
that integrates multiple bank accounts into a single mobile application. It has so far facilitated financial volumes over 147 billion with a value of 3.1 trillion US dollar. So that's a massive achievement in case of UPI. The COMIN is our third leading population scale vaccination platform, which is a transparent system that allows tracking of each dose of vaccine supplied to vaccination facilities and to the people. Till now, the platform has facilitated 2.2 billion doses of vaccination, which have been given to the people, and 1.1 billion registration for the users. DigiLocker is another population scale government-sponsored platform for issuance of and verification of all official documents and certificates digitally. Set up to provide consent-based and secure access to critical lifelong documents, the platform has onboarded 130 million users and issued over 5.61 billion official documents till now. As the DWG chair, India will try to showcase its experience, best practices, and the roadblocks in the domain to help build DPIs by proposing a common framework that suits an individual country's needs. Second is cybersecurity in digital economy. The borderless nature of cyberspace makes it critical for the G20 members to adopt a shared responsibility towards making the digital economic financial environment more secure. To further digital transformation and effectively harness the global digital economy's opportunities, ensuring its security remains vital for G20 members. The DEWG agenda under India's presidency will focus on deliberating on a robust cybersecurity framework for better awareness about cybersecurity in the digital economy. The DEWG at the G20 offers a fitting opportunities for G20 member states to discuss the security challenges in the digital economy, along with developing curated response to possible future threats. Third is digital skilling. The G20 DEWG in the past has acknowledged the challenge of digital skilling and has come up with a consensus on the need for comprehensive solutions for digital skilling. This includes the Digital Literacy Toolkit launched by the Indonesian presidency last year. India's G20 presidency seeks to carry forward the previous initiatives and introduce a strategy to develop digital upskilling and reskilling programs across G20 countries. The G20 Digital Skilling Agenda for 2023 also includes the introduction of a common reference framework for facilitating the mutual recognition of digital skills across different countries and the establishment of a center of excellence to operationalize the proposed framework. Summing it up, India's digital economy has seen tremendous growth in the past decade. Under its presidency, the country is poised to lead the G20 conversation on technology innovation and digital solutions for the economy. I have no doubt that both emerging and developed nations may benefit from business opportunities in the digital economy and raise their countries and their world's GDP. Thank you, and we eagerly anticipate additional discussions, agreements with like-minded nations, and collaboration with reliable partners for social empowerment and digital economy. As India takes up the presidency of the G20, India's success in creating a citizen-centric digital economy will be displayed as a model of creative use of technology to be replicated in other parts of the world. Once again, I extend a very warm welcome to all the distinguished dignitaries on the dais, all the delegates. We have got delegates from all the countries, and I'm happy that they have had a good experience yesterday. So we extend a warm welcome to once again all the delegates, all the participants, and each and every one of you present here. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for laying out the agenda of the Digital Economy Working Group. Under the dynamic leadership of our Honorable Minister of State for Electronics and IT, Skill Development and Entrepreneurship, several Digital India initiatives have been launched for improving the ease of living and ease of doing business. I would like to request Honorable Minister of State, Shri Rajiv Chandrasekhar, to kindly deliver his address. Start on this. It's a little too big. Okay.
the Honorable Chief Minister of the great state of Uttar Pradesh and our host in this historic city of Lucknow, Yogi Adityanath ji, my colleagues in the Government of India, Ashwini Vaishnav ji, Mahendranath Pandey ji, Secretary in the Government of India, Alkesh Sharma ji, delegates, ladies and gentlemen, thank you all for being here. A warm welcome on behalf of all of us in the Government of India to all of you attending this first digital economy working group in the historic city of Lucknow. I think we can all agree without any hesitation or any contradiction that we are living in extremely interesting and challenging times. I say both interesting and challenging. It is an opportunity-rich landscape that we look forward to, but at the same time, we have seen over the last 3 years how an opportunity-rich landscape, how an optimistic scenario of the future can be turned on its head by unprecedented events like a pandemic, a war in Europe, and all of the consequences of that on the global economy and indeed the digital and the innovation ecosystem in particular. Let me just share some views with you, some of my thoughts with you. I obviously speak as a member of a government that has used technology over the last 9 years under the leadership of our Prime Minister with his vision to really create an preeminent example of how technology can not just create innovation and successes and unicorns, but also at a very fundamental level, technology be used to transform the lives of people, citizens, the narrative of governance, the narrative of democracy in general. And I will point to you that I will make this point that for several decades, this conversation about governance, the digital economy, and innovation were indeed treated as 3 separate buckets, held together by some tenuous threads that conferences and seminars threw up. But effectively, the discourse around governance, the discourse around the digital economy, or the economy in particular, and innovation were really treated by 3 really different audiences and very disparate audiences. It was considered that digitalization was an expensive proposition, that the digital economy was always conflated with the big tech companies and the big tech giants, whether they were in the West or whether they were elsewhere. And so it was that before COVID, that was really the prism through which we looked at the digital economy. But some years before this, in 2015, as Alkesh referred to, our Prime Minister laid out a very different type of a vision for digital technologies, and he called that Digital India. He launched it in 2015. And he laid out 3 broad goals for that program, which I would like to share with you and for all of those who are increasingly looking at digitalization and the digital economy as an opportunity going forward. That learning, that journey that India has traveled is very relevant. In 2015, the goals around technology that our Prime Minister laid out was A, technology must empower people, transform their lives. B, that technology must create more opportunities within the digital economy. And C, that this whole narrative that technology is expensive, it is dominated by a few companies or a few countries, needs to be turned on its head, and technology should be a lot more available to countries that are not historically technology originators. And if you look at 2022, you look at our experience during the pandemic, a lot of the investments, a lot of the capabilities that were built leading up to 2019 helped us significantly. And I use this example always to tell my friends around the world. I have in this position, in this responsibility, the occasion to meet many ministers from around the world, digital ministers, technology ministers. And I say the best determinant or the best descriptor of the power of technology is how
for several decades, India's democracy was seen as dysfunctional, difficult to deal with, and for people to benefit from. And famously, in the late 80s and the early 90s, there was a Prime Minister of India who said, for every 100 rupees that leaves Delhi, only 15 rupees reaches the beneficiary, the Indian citizen. And in between, the 85 rupees mysteriously vanishes, a process of evaporation that has never been explained by any law of chemistry or physics. But in 2022, because of the efforts from 2014 onwards, you see today a total rejig, a redesign of the democracy of India, where the technology allows benefits, subsidies, government programs to reach Indian citizens without any leakage, without any intermediation, without any delay, with absolute clarity, and reaching the intended beneficiary without any other impediment in between, creating in turn significant amounts of increase in the trust between a citizen and his or her government. I use that as an example to just demonstrate the power of technology that we have harnessed, and the prism of technology that prism through which we see technology and its benefits for our people. A couple of other points. I know we are going to discuss, you're all going to discuss the digital economy. We are going to discuss the power of the digital public platforms, what we have built into digital government in India and other parts of the world. And the fact that the internet today in India is, we have 800 million Indians online, with 1.2 billion Indians coming online very shortly. Making the whole issue of user harm, safety, and trust on the internet, and therefore cybersecurity, an important element of what we plan for the future as well. And I think countries around the world, we need to collaborate, we need to discuss, as the internet, as we know, is open and ubiquitous and has no boundaries and no geographical lines that distinguish your internet from our internet or their internet from somebody else's internet, that we also speak about how do we deal with making the internet a safe and trusted and accountable place for all our citizens. I will just end by, this is obviously, I've spent 3.5 decades in technology, and this is an audience that I would like to spend hours and hours having discussions and engagement with, but I'm limited to 5 minutes to speak, and I will sign off by saying this, that I think we are living in absolutely exciting, unprecedented times for all those who are engaged with technology, public policy making and policy making. What we have seen in the last 5 years is, I believe, a tip of the iceberg. The next decade, as we see it, is a decade of technology opportunities. And I think for the youth and the young people of all our countries, technology represents an ability to grow, innovate, prosper in a manner that they haven't seen and had opportunities for any time in the past many, many years. And as our Honorable Prime Minister says, this is not the time for war, this is not a time for conflict, this is really a time for our policymakers to work together and create a better future for the youth of the world, and youth in particular in all our countries. So thank you very much for being here. Thank you for participating in this DWG, the first DWG. Thank you for your attention. Jai Hind. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, now I am privileged to introduce Shri Mahendra Nath Pandey, our Honorable Minister for Heavy Industries, Government of India, under whose able leadership, heavy industries and allied sectors of our economy are flourishing. May I request our Honorable Minister to please share his thoughts with the audience. आज भारत के सुप्रसिद्ध शहर लखनऊ में फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के शुभारंभ के मौके पर यहाँ डायस पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय मंत्री
श्री अश्विनी वैष्णव जी और माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, और श्री अलकेश कुमार शर्मा जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी भारत सरकार, एंड द ऑनरेबल डेलीगेट्स ऑफ G20 कंट्रीज एंड इनवाइट कंट्रीज तथा अन्य सम्मानित जन, मीडिया के बंधु, आप सबके प्रति सम्मान। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में न केवल भारत विश्व में अलग पहचान बना चुका है, बल्कि आज G20 के माध्यम से पूरी दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा है। आज चाहे दुनिया भर में कोरोना जैसी महामारी का विषय हो या तुर्की और सीरिया में हाल में आए भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का विषय हो, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने वैश्विक कर्तव्य का निर्वहन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल लीडर के प्रथम पायदान पर खड़े होकर पूरे विश्व को एक महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में पूरे भारत को जिस प्रकार विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ। डिजिटल तकनीक G20 सदस्य देशों के आर्थिक रूपांतरण की आधारशिला रही है। शासन से लेकर कारोबार तक के मामले में सेवाओं और उत्पादों की प्रभावशीलता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए इन तकनीकों को अपनाया गया है। बात स्वास्थ्य की हो, कृषि की हो, विनिर्माण की हो, खुदरा कारोबार, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवा या शिक्षा की, डिजिटल तकनीक की पहुंच आज हर उद्योग में है। आज अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकियों को मजबूत उपस्थिति और नई तकनीकें भी लगातार सामने आ रही हैं, जो कारोबार और सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। चाहे उन्नत रोबोटिक्स, वस्तुओं के इंटरनेट, बिग डेटा एनालिटिक्स, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तथा क्वांटम कंप्यूटिंग आदि इसके उदाहरण हैं। ये तकनीकी विनिर्माण और भारी उद्योग क्षेत्र के लिए भी बेहद अहम है। इनके उपयोग से उत्पादन प्रक्रिया बेहतर हुई है, उत्पाद परिष्कृत हुए हैं और आपूर्ति श्रृंखला को भी बहुत मजबूती मिली है। इसके कारण ही ये चौथी औद्योगिक क्रांति आई, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मनुष्य को मशीन के बेहतर संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में इंडस्ट्री 4.0 में निवेश लगभग 10 गुना बढ़ा है, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर $200 अरब हो जाने की संभावना है और उसका पूर्ण अनुमान है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा G20 के सदस्य देशों द्वारा ही किया जाना है, ताकि औद्योगिक कामकाज और कारोबार बेहतर हो और उद्योगों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के कायाकल्प में तकनीक की उपयोगिता को देखते हुए डिजिटल भविष्य को बेहतर करने के लिए G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह, जो यहाँ पर इस पर चर्चा होने का एक वहां महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए आवश्यक है कि उद्योगों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, परिणामी नवाचार और डिजिटल परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। उद्योगों और अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि सभी डिजिटल तकनीकों और डिजिटल रूप से सक्षम भविष्य के लिए तैयार एक कार्यबल तैयार किया जाए। ये सभी पहलू मिलकर उद्योगों को आर्थिक वृद्धि में बेहतर योगदान कर सकने में सक्षम बनाएंगे और इनसे हम एक गतिशील, सशक्त, लचीले तथा समावेशी डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। जहां तक भारत की बात है, हमारी उभरती अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीक के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सरकार पूंजीगत वस्तु स्कीम के तहत हमारे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नवाचार के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 को अपनाए जाने को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए रोबोटिक्स, ड्रोन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बुद्धिमत्तापूर्ण मोटर वाहन तकनीकों, सेंसरों, इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल्स तथा सुरक्षा कंपोनेंट और प्रणालियों से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस नवीनतम तकनीकों के आने से उद्योग जगत के कार्यबल और युवा इंजीनियरों को नई तकनीक में कुशल बनाना आवश्यक हो गया, जैसे डिजाइन, मॉडलिंग, उद्योग प्रोटोटाइप और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग।
इस कमी को पूरा करने के लिए ही भारी उद्योग मंत्रालय सेक्टर स्किल काउंसिलों के माध्यम से 100% उन्हें सहायता दे रहा है, ताकि उद्योग के लिए नेतृत्व में लेवल 6 और इससे ऊपर के लिए नया राष्ट्रीय कौशल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तथा क्वालिफिकेशन पैक को विकसित किया जा सके। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 3 वर्षों में आगामी 70,000 दिनों में 70,000 से अधिक लोगों को कुशल बनाने के लिए उद्योग संघों और एसएससी के बीच तालमेल कायम करेगा। 7 फ्लोर प्रक्रियाओं के स्वचालन और विनिर्माण में रोबोट के उपयोग के क्षेत्र में विकास इस बात के उदाहरण है कि किस प्रकार तकनीक ने गति और मानकीकरण के मामले में असेंबली लाइन को बदल दिया। रोबोटिक्स के क्षेत्र में वृद्धि को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग और मोटर वाहन उद्योग, धातु और मशीनरी, प्लास्टिक तथा रासायनिक उत्पाद से बल मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिजिटल अर्थव्यवस्था पर अपने हालिया भाषण में इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि डिजिटल इंडिया देश को गौरवान्वित कर रहा है, और बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी विशेष रूप से सराहना भी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई के माध्यम से डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक पल में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, और कोविड के समय में विशेषकर भारत ने कोविनेक के माध्यम से डिजिटल इंडिया में इन दोनों क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने भी देश के निर्माण में क्षेत्र में इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयोजन से एक समर्थ उद्योग नामक पहल की है। इन राष्ट्रीय केंद्रों को समर्थ उद्योग नाम बड़ा ही उचित दिया गया है, जिसमें समर्थ यानी स्मार्ट एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, ये राष्ट्रीय केंद्र ऐसा माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं जहां विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, खासकर छोटे और मझोले उद्यम डिजिटल उद्योग प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए साथ साथ आगे बढ़ सके और उनमें कौशल विकास भी हो सके। इन प्रदर्शन केंद्रों के माध्यम से उद्योग को पारंपरिक मशीनों को अपग्रेड कर और बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक स्मार्ट विनिर्माण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र की तकनीकों के रूपांतरण के लिए डिजिटल रूप से कुशल प्रतिभा का होना अत्यंत आवश्यक है। उद्योग में डिजिटल तकनीक के उपयोग के लिए कार्यबल को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि समावेशिता और आजीविका में व्यवधान न आए। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इन एकीकृत प्रयासों से डिजिटल रूप से समावेशी समाज का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा और सस्टेनेबल डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इसका प्रभाव G20 सदस्य देशों के साथ साथ अन्य देशों में और संपूर्ण विश्व में भी दिखाई पड़ेगा। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Our next speaker is someone who wears many hats, leading a number of key portfolios for the Government of India. With his stewardship of railways, telecom, and digital public infrastructure, he brings a new level of energy to the Indian economy. Excellencies, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister for Electronics, Information Technology, Railways and Communication. Thank you. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Union Ministers, Shri Mahendranath Pandey ji, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Chief Secretary, Shri D.S. Mishra ji, Secretary, Shri Alkesh Sharma ji, distinguished delegates, wish you all a very warm welcome to the first Digital Economy Working Group. 2023 is going to be a landmark year in many ways. We have collectively overcome a huge pandemic that threatened the very fundamental modern way of life. Digital technologies have got accelerated and have become an integral part of our lives today. AI, 5G, quantum technologies, they have come of age. There is a
serious inflection point. It is in these exciting times that India has assumed the leadership of G20. Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has created a unique framework for digital economy. This framework is inclusive. It focuses on making a significant difference in every citizen's life. It places premium on openness and trusted technologies. It emphasizes scalability to a population scale. And most important element is that the India stack can be deployed in any country that you choose. The uniqueness of India stack lies in the way we approached digital economy, digital technologies. Unlike many geographies where digital technologies were concentrated in the hands of few big, large, powerful companies, India created a public-private partnership model. What is this public-private partnership model? Public-private partnership model basically has a huge role for every stakeholder. Take the example of the payment system, the UPI, which many speakers will explain in good detail. The government of India invested public funds in creating a robust platform, and then it invited every stakeholder to join. Who are these stakeholders? More than 300 banks joined, insurance companies joined, e-commerce companies joined. Every possible stakeholder who uses payment and who doesn't use payment, everybody uses payment, right? Everybody joined. 1.2 billion people joined this platform. Imagine the power of this platform. No single company, no single person has complete control of this. Every person is, in a sense, it democratizes complete technological solution. And the results are in front of everybody. 2016 is when UPI was launched. By now, it has reached a scale where on an annual basis, 1.5 trillion US dollar worth transactions are done, and the average settlement time is 2 seconds. It's phenomenal. It's phenomenal. Trillions of transactions flawlessly done. No single person, no single company can have control of it. Open, transparent, algorithm driven, absolutely no issues of privacy protection. All things combined is what the platform is. Similar platforms, same approach, creating a public platform, then let everybody join. When the COVID pandemic hit us, how do we manage vaccination of a population of this scale with the challenges that we have in logistics? Once again, the government of India created a public platform called CoWIN. Everybody else joined. The pharmaceutical companies, the vaccine companies, the airlines who have to manage the transportation, the hospitals, the clinics, the state governments, everybody joined this, and 1.2 billion people joined this platform. Believe you me, each and every vaccine, scheduling, transportation, what is the stock available in a clinic, everything was managed digitally, and within a short time frame of 2 years, 2.2 billion vaccine doses have been administered flawlessly. And the vaccination certificate doesn't have to be printed on paper. The moment your vaccination happens, the certificate is there in your mobile phone in a digital form with a proper QR code, proper certification, proper authentication in it. If a person has taken a vaccine on a date X, what is the second dose date pops up in your CoWIN platform. If the first vaccine was taken on the left hand, second vaccine has to be taken on the right hand. So the CoWIN tells you, oh, your first vaccine was on the left hand, this time
Take it on your right hand. That's the power of digital technology on population scale with public-private partnership. Friends, you will discuss in good detail all these, how this technology became possible, how the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision was translated into this great technology. I'll share one more thing and then end it. Telecom is the backbone of digital economy, friends. Therefore, it must come from trusted sources. We all face this challenge today. Our Prime Minister decided to develop 4G and 5G telecom technology stack, and within a very short time frame of about 20 months, the team India has developed a very robust, totally virtualized, absolutely as per global standards, a telecom technology stack that was initially tested for 1 million simultaneous calls. Then it was tested for 5 million simultaneous connections. And last December, it was tested for 10 million simultaneous connections. This year, the entire technology stack will be rolled out throughout the country. Of course, 5G is being rolled out using global solutions, but in line with the global solutions that we have, there will be a solution from India, designed in India, made in India, and trusted fully as per global standards. Friends, India believes in sharing. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has authorized us to offer the India stack to the world. This is our contribution to the world. This is because our civilizational ethos teaches us that entire humanity is one family. And that's why the theme of this G20 is One Earth, One Family, One Future. We all share the same future. I wish all the delegates very good stay in India, enjoy the delightful cuisines, buy beautiful handicrafts, and join the confluence of ancient society with modern world. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful remarks. Uttar Pradesh, one of India's largest states in the country, is also amongst North India's leading IT hubs. Over the past few years, there has been a dedicated focus on developing the state's physical infrastructure, digital infrastructure, and human capital. The dynamic leadership of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh has helped strengthen its IT and electronic sector and also its startup system, both of which are playing a key role in driving the country's growth. Ladies and gentlemen, it is my honor to invite Yogi Shri Adityanath, the Honorable Chief Minister of the state of Uttar Pradesh, to address the gathering. G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के आज के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के भारी उद्योग के माननीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री लकेश कुमार शर्मा जी, G20
समूह से जुड़े हुए सभी देशों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों और संगठनों के सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, उपस्थित मीडिया के मित्रों, भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भी आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के पास कुल आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते सबसे युवा शक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण आधार एमएसएमई का बेस चाहिए, ऐसे 96 लाख एमएसएमई की यूनिट भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। भारत के एक ऐसे राज्य की राजधानी लखनऊ में, जो अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है, G20 समूह से जुड़े हुए विभिन्न देशों से आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का, सहयोगी मित्र देशों के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का, संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का मुझे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यहां पर स्वागत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी की जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह भारत की कुल आबादी का लगभग हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग इतनी बड़ी आबादी के साथ में
पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं और तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अक्सर एक बात की शिकायत होती थी आज से 6 वर्ष पहले कि इसमें खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें ई पॉस मशीन लगाई, ई पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कराने के बाद 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी प्रदेश को इसके माध्यम से हुई है। इसी प्रकार से जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी आज परिवर्तन हम सबको देखने को मिलते हैं, वह तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 6.25 करोड़ कोविड टेस्ट कराने में भी हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आज व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं और आज उसका परिणाम है कि देश की 25 करोड़ की आबादी के सबसे बड़े प्रदेश में हर ओर वह परिवर्तन हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें तो 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 1 करोड़ उन लोगों को जो निराश्रित महिलाएं थी, वृद्धावस्था में निराश्रित वृद्धजन थे या दिव्यांगजन थे, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग इस तकनीक के माध्यम डीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा हम डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को जो काफी वीकर सेक्शन के हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी हम डीबीटी के माध्यम से धनराशि उनके अकाउंट में भेजते हैं और वे स्वयं अपने उसके माध्यम से अपनी राशि को खरीदते हैं। अपने लिए जो भी उनके लिए उपयोगी हो, यूनिफॉर्म बनाने का काम करते हैं या बैग और बुक्स का क्रय उस धनराशि से स्वयं करते हैं। किसानों को मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा डीबीटी के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है और प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन भी
उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा अभी 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इन्वेस्टर समिट से वैश्विक व्यापारिक समुदाय से 40 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें प्रतिभाग किया था और उस पूरे आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। इसके लिए हमें तकनीक को अपनाना पड़ा था, जिसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों को किसी भी एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश सारथी के रूप में यहां पर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निवेश मित्र के रूप में हमने यह सुविधा हर एक निवेशक को उपलब्ध करवाई और जो भी निवेशक प्रदेश के अंदर निवेश करे और निवेश की सफलता के बाद शासन से मिलने वाली, शासन की किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली इंसेंटिव को इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पे निवेश हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने अपने नागरिकों के और उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। आज भारत ने जो प्रगति की है इस दिशा में, वो वास्तव में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के लिए एक नया मार्गदर्शन हो सकता है। खासतौर पर G20 के लिए जो थीम निर्धारित किया गया है, वह भारत की प्राचीन थीम है जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम सबको जोड़ता है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये वास्तव में भारत का वो प्राचीन श्लोक है जो भारत की दुनिया के बारे में उस सोच को प्रदर्शित करता है, जिसमें हमने जो कुछ भी हमारे पास था या भारत के पास है, उसको हम लोगों ने कहीं भी किसी राग द्वेष के या किसी भी अन्य अहंकार के कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है तो इस पे मेरा ही एकाधिकार है। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। भारतीय मनीषा ने तो एक ही बात कही थी, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना निहित है, जो आज जो G20 के इस थीम के साथ आज डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की इस बैठक के साथ हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में यहां पर एकत्र बैठे हुए हैं। निश्चित ही डिजिटल इकोनॉमी वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, उनके जीवन में और मानवता के जीवन में व्यापक कल्याण का भाव लेकर के आगे बढ़ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि G20 वर्किंग ग्रुप की यह बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी आए हैं, कुछ नए मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आप सभी एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सब ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की इस प्रथम बैठक में उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की, क्योंकि ये लगातार 5 दिनों के 2 इवेंट 5 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका मैं हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि G20 डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की यह बैठक निश्चित ही देश को और दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस पूरे अभियान की प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Honorable Chief Minister, for sharing your valuable time and your thoughts with us. May I request Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary, Ministry of Electronics and IT, to kindly present a memento to our dignitaries. Yogi Shri Adityanath, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister, Electronics, IT, Railways and Communication. Shri Mahendranath Pandey, Honorable Minister for Heavy Industries. Shri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Minister of State for Electronics and IT, Skill Development and Entrepreneurship. Shri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. Now, I would like to request Shri Sushil Pal, Joint Secretary, METI, to present a memento to Secretary Shri Alkesh Kumar Sharma.